अस्सलाम वालेकुम। हम बात करें बायोग्राफ़ीज़ की, थोड़ा-सा नॉन फ़िक्शन का जो हमने पूरा एक एरिया पढ़ा है अब तक, उसमें हम निकाल के लेकर आते हैं बायोग्राफ़ीज़, क्योंकि बायोग्राफ़ीज़ बहुत लिखी जाती हैं और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें घोस्ट राइटर्स बहुत रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसलिए इसको हमने थोड़ा-सा सेपरेट किया है और हम इसके ऊपर ज़रा-सा और डिटेल में जाएँगे, ताकि आप अगर एक घोस्ट राइटर के तौर पे काम करना चाहते हैं और आपने अपना सीवी डाला है अपवर्क में या guru.com में या फ्रीलांसर में या फाइवर में या जो इतने सारे पोर्टल्स हैं जो फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, और वहाँ पे सडनली आपको कहा जाता है कि जी रिक्वायर्ड अ घोस्ट राइटर, तो वो अक्सर और बेशतर ऑटोबायोग्राफी के लिए या बायोग्राफी के लिए या मेमोआर के लिए होता है। थोड़ा-सा हम बात करेंगे, इसको डिफ़ाइन भी करेंगे कि ये तीनों चीज़ें क्या हैं। मगर जस्ट टू शेयर विद यू, दिस इज़ वन एरिया जिसमें बहुत ज़्यादा घोस्ट राइटर्स या क्रिएटिव राइटर्स जो कि किसी और की कहानी लिख रहे हैं, उनकी ज़रूरत होती है। तो इस सेशन को ज़रा गौर से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, और हम आपको इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स पहले दे चुके हैं, मगर एक थोड़ी-सी अब हम एक आपको सैंपल भी पढ़ के सुनाएँगे और एक प्रैक्टिकल करके भी दिखाएँगे कि अगर हम बायोग्राफ़ी लिखने जा रहे हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे। तो डेफ़िनिशंस की तरफ चलते हैं, दोबारा से वेरी क्विकली रिकैप करते हैं। ऑटोबायोग्राफ़ी क्या होती है? ऑटोबायोग्राफ़ी होती है जब आप अपनी कहानी के बारे में खुद लिखते हैं। बायोग्राफ़ी क्या होती है? जब आप किसी और की ज़िंदगी के बारे में लिखते हैं। मेमोइर क्या होता है? ये ज़रा-सा ऑटोबायोग्राफ़ी और बायोग्राफ़ी ज़रा ज़्यादा फ़ोकस्ड होता है, और यहाँ पर एक ख़ास इंसिडेंट के बारे में लिखा जाता है। जो मेमोइर है, वो पूरी ज़िंदगी का स्पैन नहीं है, वो एक ख़ास फ़ोकस्ड टाइम है या फ़ोकस्ड इंसिडेंट है या फ़ोकस एक जगह है जहाँ पर उसके बारे में लिखा जाता है। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल पढ़ के सुनाऊँगी एक बायोग्राफ़ी की। एक्सेप्ट है, पहला इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, इंट्रोडक्टरी बर्थ एंड पेरेंटेज। One who has enriched the inheritance left by Newton and has consolidated the work of Faraday, one who impelled the mind of Cambridge to a fresh course of real investigation, has clearly earned his place in human memory. But there was more in James Clerk Maxwell than is implied in any praise that can be awarded to the discoverer, or in the honor justly due to the educational reformer. Much indeed which his friends feel they can but partly estimate and still less adequately describe. We have notwithstanding undertaken this imperfect memoir of him, in which the purpose of this first part will be to trace the growth from childhood to maturity, and to record the untimely death of a man profound original genius, who was also one of the best men who lived, and to those who knew him, one of the most delightful, interesting of human beings. If I can bring before the reader's mind, even in shadowy outline, the wise and gentle but curiosity, blended influences which formed the cradle of his young imagination, the channels to which ideas reached him from the past, the objects which most challenged his observation and provoked his invention, his first acquaintance with what permanently interested him in contemporary speculation and discovery, and the chief moments of his own intellectual progress in early years, such record should have a right to live. And it may be that a congenial spirit here and there may look with me into the depths of this unique personality and feel the value of the impulses, often seemingly wayward and strange, even to himself, with which the young eagle impelled his wings for flight, or taught his eyes to bear the unclouded light. And many to whom modern science is sealed book may find an interest in observing the contamination of extraordinary gifts with no less remarkable simplicity and strength of character. James Clerk Maxwell was born at number 14 India Street, Edinburgh, on the 13th of June 1831. His parents were John Clerk Maxwell, one of the clerks of Penicuik,
in Midlothian and Frances, daughter of R.H.K. Esquire of N. Charlton, Northumberland. Excepting a daughter Elizabeth, who died in infancy, James was their only child. Edinburgh was at this time the natural meeting place for the best spirits of the North. How much of intellect and individuality, of genuine thought, often eccentric worth, of high thinking and plain living, then foregathered in Old Reekie, and found ample scope and leisure there, is known to the lovers of Sir W. Scott and to the readers of Lord Cockburn, both prominent figures in the Edinburgh of 1824 to 1831. पढ़ने को तो मैं पूरी पढ़ती चली जाऊंगी और आगे बहुत कुछ है। बेसिक चीज़ यही है कि उनकी जो ज़िंदगी के बारे में ये है, वो एक बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से ऑथर ने बताया है कि कौन था वो। एक साइंटिस्ट था जिसने बहुत इजाद किया, एक ख़ास ऐसे हिस्ट्री के ज़माने में रह रहा था जहाँ बहुत से ऐसे लोग और भी थे जो क्रिएटिव थे, जो इन्वेंट कर रहे थे। एडिनबरा में पैदा हुआ, ओनली चाइल्ड था। ये सारी सीधी-सीधी बातें मैंने आपको जो अभी बताई हैं, ये जो ऑथर है वो भी बड़े सीधे-सीधे तरीके से बता सकता था, मगर उसने एक क्रिएटिव तरीके से आपके साथ वो कहानी जो है बायोग्राफ़ी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की शेयर की है। आपने देखा होगा कि एक नक्शा सा, एक इमेजरी सी जो है वो अनफ़ोल्ड होती चली जा रही है हमारे साथ। अब मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखती हूँ और जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो आमिना कमाल है। और जो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो मैंने इस पूरी कहानी में लिखनी हैं, वो एक टाइमलाइन के ज़रिए मैं बताऊँगी कि कुछ आप रैंडमली भी कर सकते हैं, मगर मैं एक टाइमलाइन के ज़रिए बताऊँगी कि जी बचपन, चाइल्डहुड, टीन इयर्स, 20s, 30s एंड नाउ माय 40s। तो एक टाइमलाइन के ज़रिए मैंने जो है वो अपनी ऑटोबायोग्राफ़ी जो है वो लिखनी है। अब चाइल्डहुड में क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं, प्लेस एंड टाइम दैट आई वाज़ बोर्न, यानी कि वो एनवायरनमेंट क्या था, वक़्त क्या था, चीज़ें क्या हो रही थी। टीन इयर्स में बड़े-बड़ी चीज़ें जो मेरे साथ हुईं, लेट्स से आई आर्ट का एक चीज़ मुझे डालनी है, लेफ्ट फॉर अमेरिका डालना है। 20s में केम बैक टू पाकिस्तान, 30s में द अवार्ड्स आई वन विद द यूएन, और 40s में वेंचर इनटू द क्रिएटिव फील्ड। तो ये जो है हमने ये किया कि जी मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफ़ी जो है वो एक टाइमलाइन के ज़रिए मैंने जो अपने इंसिडेंसेस जो हैं वो डिफ़ाइन कर लिए हैं। तो जब मैं किताब शुरू करूँगी अपनी, मुझे ये पता है कि जी जब मैं अपने चाइल्डहुड के बारे में बात कर रही होंगी, मुझे इन चीज़ों के बारे में बात करनी है। जब मैं टीन ईयर्स के बारे में बात करूँगी तो मुझे इन चीज़ों के बारे में बात करनी है। 20s, और आई हैव सॉर्ट ऑफ डिफाइंड एक आउटलाइन सी मैंने दे दी है। और अगर अब इस आउटलाइन को हम क्रिएटिवली देखते हैं, तो हम इसकी स्टार्ट जो है वो एक नॉर्मल ज़रिए भी कह सकती हूँ कि जी आई वाज़ बोर्न इन कराची इन 1973 एंड इट वाज़ अ हॉट डे, बट मैं ऐसे नहीं करूँगी। तो अमंग द मैनी crying babies, there were the shrill screams that could be heard throughout the corridors of Seven Day Hospital. Some say all over Karachi too. It was 9th September
1973 I was born। इस तरह मैंने अपनी कहानी शुरू कर दी और फिर आगे चलते चले जाएँगे कि जो मैंने टाइमलाइन में बताया था, जो इंसिडेंसेस हैं, उनको लिखते चले जाएँगे एक क्रिएटिव तरीके से, एक इंटरेस्टिंग तरीके से। आई होप दिस हैज़ इंस्पायर्ड यू कि आप अपनी कहानी लिखें या दूसरों के लिए घोस्ट राइटिंग करें या ऑटोबायोग्राफी भी घोस्ट राइट करें। इट्स अ लॉट ऑफ फन and you learn about your own life and you learn about other people's lives and it also makes a good living. Thank you so much.